Hello everyone and welcome to Career Launcher. In this session, we will be discussing about the US presidential election 2024 because this was very much demanded topic, and I think I find it important because it has been in the news for the last few months and it will remain in the news for the next few months. ठीक है, तो मैंने सोचा कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थिंग्स हैं उसको डिस्कस करा लिया जाए बिकॉज वो काफी दिनों से न्यूज में था. So that is why. So, yes. Am I audible and visible? मेरी आवाज आ रही है? Yes. Okay. Yes. So so before moving on, if I'm audible and visible, please write in the comment section once. Yes, sir, you're audible. Everything is clear. Okay. Yes. Good evening, Sharvi, Tanishka Verma. Good evening. अच्छा, हम लोगों ने लास्ट मीन्स थर्सडे क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एससीओ समिट 2024. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसमें लास्ट में मैंने कुछ होमवर्क दिया था. मैंने बोला था कि व्हाट इज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बताना था और विच जजमेंट टॉक्ड अबाउट इट. तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और ये वाला दोनों लिंक्ड है ना. सो दिस इज एक्चुअली केशव नंदा भारती केस है ना. ये तो आपने सुना होगा 1973. Basic structure doctrine says that yes, actually the parliament cannot amend everything of the constitution. There is a limit, and that limit is that it cannot destroy the basic structure of the constitution. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरी एक एडवोकेट जनरल के बारे में मैंने पूछा था. एडवोकेट जनरल इज एक्चुअली द सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के सबसे सीनियर मोस्ट लॉयर होते हैं. ठीक है. सो विच इज मेंशन इन 165. This is Article 76 talks about Attorney General. In the same fashion, 165 talks about Advocate General at the state level. ठीक है. अब देखो, और केशव नंदा भारती केस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. So yes, many people have answered it. कुछ लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई. वो mistakenly they wrote central government, but be careful, it is state government. I was asking Advocate General, not Attorney General. ठीक है. सो बाकी रेस्ट यू आर राइट सोहम कुमार. बस ये आपसे थोड़ा सा मिस्टेक होगी. बट जैसे आराधना ने लिखा ना, इज हाईएस्ट स्टेट्स हाईएस्ट लॉ एनफोर्समेंट नहीं, लॉ ऑफिसर लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, लॉ ऑफिसर या लॉयर कह सकते हैं, बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर तो ब्यूरोक्रेट के सेंस में होता है. सो इट इज बेटर टू राइट स्टेट्स हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. ठीक है. देन एडवोकेट जनरल इज अ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट. ये सही लिखा हुआ है, भूमिका ने जो लिखा. ठीक है. So this you should be knowing. Then basic structure तो everyone knows it, है ना. केशव नंदा भारती केस तो ये तो सही होगा, है ना. Similarly, जैसे मनस्विनी ने लिखा है, एडवोकेट जनरल इज द स्टेट्स हाईएस्ट लॉ ऑफिसर. लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज नॉट करेक्ट. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है, इज राइट. ठीक है. हो सकता है मे बी एआई ने जनरेट किया हो, तो एआई से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है. लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जनरली ब्यूरोक्रेट्स होता है, ऑफिसर होता है, बट यहाँ पर ही इज एक्चुअली अ लॉयर. ठीक है. सो द टर्म यूज शुड बी लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. देन यहाँ पे वी शर्मा से भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. दिस शुड बी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज फाइन. Okay, so now we are talking about, let's start with today's topic, that is US presidential election. इस पे शुरू करते हैं and without wasting our time, so let's start with the question answer. So the first question is in front of you. Please read the question carefully and answer it. जो मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उसमें बहुत सारी नॉलेज की चीज होती है ना. सो यू लर्न अ लॉट एंड देन फ्रॉम देयर एक्चुअली इट इज दिस इज हाउ वी लर्न. कि पहले क्वेश्चन आंसर होता है, क्विज होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी लर्न मेनी थिंग्स. सो जो 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी द डैश क्वाड्रिनेलियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. क्वाड्रिनेलियल मींस व्हिच हैपेंस एवरी 4 years, है ना. So the voters in each state and the District of Columbia will choose the electors to the electoral college. Electoral college का concept इंडिया में भी होता है. I hope you are aware. Who then elects the president and vice president for a 4 term of 4 years. So V Sharma has said D, and she has given the logic also. Then Mishika is also saying 47 D. That is why I gave this question. Okay, because I knew that with the logic the answer should be D, but which is not correct. So D is not correct.
देखो मैं आपको ऐसे बताता हूं, अभी रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में, वो कितनावा लोकसभा इलेक्शन था, और क्या नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर उतने ही है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. इसीलिए मैंने पूछा था, इज इट इज ट्रू यू हैव सेड व्हाट यू हैव सेड अबाउट जो बाइडेन इज राइट, बट लॉजिकली इट इज नॉट द 47th इलेक्शन. इसीलिए मैंने डी में एक ऑप्शन रखा था, द राइट आंसर इज 60th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि हमेशा ना विकिपीडिया का फर्स्ट शुरू का पैसेज वगैरह पढ़ा कीजिए, बिकॉज दे डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम विकिपीडिया. सो द राइट आंसर इज बी, एंड रिद्धिमा द्विवेदी हैड आंसर्ड मी करेक्टली, एंड तनिष्क वर्मा एंड आयुष दिव्यांश, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे हो जाएगा, जब 60 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो 60 प्रेसिडेंट होने चाहिए, है ना? बट दिस इज नॉट द केस. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर मी, एंड देन आई विल एक्सप्लेन. और ये मतलब लॉजिकली एस्टैब्लिश हो सकता है. देखो आप लोग जो बाइडेन कहते हो, बट हिज नेम इज दिस. व्हाई आई एम आस्किंग मेंशनिंग दिस, बिकॉज अगर आपने क्लैट 2021 का पेपर देखा होगा, you know, you will be surprised to know that they had asked about the full name of which person? Ukrainian president. ये पूछा था, and they gave 4 options, और सब में Zelensky लिखा हुआ था, and all the 4 options were mentioning Zelensky. तो वो एक्सपेक्ट करे थे कि आपको पूरा नाम पता होना चाहिए. ठीक है, so his name is Joseph Robinette Biden, and he is actually the 46th president of US. ठीक है, अब बोलोगे सर 46th प्रेसिडेंट है और बोल रहे इलेक्शन 60 बार हुआ, ये कैसे हो सकता है? बिकॉज 1 पर्सन कैन बी इलेक्टेड ट्वाइस ऑल्सो. ठीक है, दैट इज वाई जब नए प्रेसिडेंट बनेंगे ना, चेंज होकर के, तब वो ऐड होता है 46 से 47 और 48 लाइक दैट. ठीक है, सो दैट इज वाई देयर इज नो गारंटी दैट बोथ शुड बी इक्वल, एंड ये आपको केयरफुल रहना. सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, दीप्ताक्षी, शारवे, राबिया, रिदिमा, आरव, आयुष, दानिश, यू आर द राइट. वीर शर्मा, दिव्यांश. हाँ, now the next one, एक दो चीज और पता होना चाहिए. he is the oldest serving president in US history. जो इतने old में भी he is actually the president, so just have an idea. Born in 1942. Now let's move on to the next one. Now name the 2 political parties of USA with the symbols I have shown here. जो 2 political party उनका नाम बताना है और symbol के साथ. So this is actually elephant and this is donkey. Elephant किसका सिंबल है? रिपब्लिकन, डेमोक्रेट. यस, डेमोक्रेट, डंकी. एंड एक ही कमेंट में आंसर कीजिए. हाँ, एलिफेंट एंड डंकी. यस, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, रिपब्लिक ऑफ अमेरिका. यस, डेमोक्रेट्स, डंकी, रिपब्लिकन, एलिफेंट. यस, आरफ, यू आर राइट, वेरी गुड. देन मिशिका इज आल्सो राइट. यस, वीर शर्मा इज आल्सो राइट. डेमोक्रेट, एलिफेंट नहीं. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन. एलिफेंट जो है किसका है? रिपब्लिकन का. एंड हु इज द रिपब्लिकन कैंडिडेट इन द करंट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? रिपब्लिकन कैंडिडेट कौन, इनका नाम बताइए. एंड डोंकी इज एक्चुअली द डेमोक्रेट. सो डेमोक्रेट के कौन से कैंडिडेट है, प्लीज टेल मी. हाँ, हियर एक्चुअली द कैंडिडेट इज डोनाल्ड ट्रंप. And who is the candidate in Democrat Party? Kamala Harris. Yes, Mishika, very good. Ayush, Mukti. You're right. Kamala Harris. And Joe Biden belongs to which party? Joe Biden belongs to which political party? Democrat or Republican? जो बाइडेन कौन से पार्टी से? यस, डेमोक्रेट. यस, शारवे, मिशिगा, गुड. हाँ, तो जो बाइडेन जो है ना, इट इज क्लियरली रिटन, है ना. इनफैक्ट इन्हीं की जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, जो इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, हिज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्चुअली अ फीमेल. द करंट वन इज एक्चुअली, है ना, जो बाइडेन इज जो वाइस प्रेसिडेंट है इज एक्चुअली कमला हैरिस. ओके, यस, this you should be knowing about it. So now she will be the presidential candidate from Democrat Party and from Donald Trump's party is Republican Party. ठीक है. Now तो this you should be knowing about it. Democrat Party का थोड़ा सा अगर आप चाहो तो हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेना, because it is in the news. So I would suggest कि किन्होंने फाउंड किया था. Then here is Republican Party. ठीक है, ये 1854 में एंटी स्लेवरी था, मूवमेंट था एंड ऑल. ठीक है, so this you should be knowing about it.
ओके नाउ एक चीज और है, अगर आप जाके फाइंड आउट करना, अब्राहम लिंकन बिलोंग टू विच पार्टी, बिकॉज अब्राहम लिंकन का बहुत नाम आता है ना, अब्राहम लिंकन, गो एंड फाइंड आउट ही बिलोंग टू विच पार्टी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, फाइंड आउट. Khair. Now there's the next question which is in front of you. Please read it carefully and then answer it. अभी मैं नहीं बताऊंगा अब्राहम लिंकन का, बिकॉज लास्ट में मैंने कुछ होमवर्क्स भी दिया है, तो ठीक है इसलिए. खैर कुछ लोग लिख रहे हैं आंसर. हाँ ठीक है. यस आरफ मुख्तियार इज वेरी नियर 12 नवंबर 4 नवंबर. तो एक्चुअली क्या मैं इस क्वेश्चन से जो बताने का मकसद है वो समझना है, ठीक है. अगर आप एग्जैक्ट डेट नहीं मंथ भी बता दो, आई विल बी हैप्पी. यहाँ पे नवंबर होगा और यहाँ पे जनवरी होगा, ठीक है. ये 20 जनवरी 4 नवंबर है, ठीक है. So this is 5th November and 20th January. So 5th November and 20th January. Now, देखो होता क्या है, like for example in case of India, this is not the case in India but only in America. कि जैसे अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन हुआ, जल्दी रिजल्ट आ जाता है, नवंबर में रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है. बट दे वेट फॉर 2 months एंड जनवरी में जो है न्यू कोरोनेशन होता है. तो होता यह है कि जो ओल्ड प्रेसिडेंट है उसके पास स्टिल 2 months में पावर होता है, इवन इलेक्शन हार जाने के बाद भी. If the old president has lost the election, still that president has power for the next 2 months, which is not the case in India. अगर इंडिया में इलेक्शन हार गए तो तुरंत जो है 1-2-4 दिन के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है. This is what I wanted to highlight, that in USA this is the case, that they are even after election results getting announced, they wait for 2 months, ठीक है. So that is what you should be knowing about it. खैर ठीक है, तो ये बता रहा हूँ. Vice presidential candidate from Republican Party, डोनाल्ड ट्रम्प पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन है, ये सब फास्ट आंसर कीजिए, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू आंसर इट फास्ट. द आंसर इज जेडी वांस, ठीक है. यस एंड हियर इट इज जेडी वांस फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी, है ना. यस पीर शर्मा, शारवे, मिशिका, मुक्ति, शारवे, आरब, you all were right. And in fact, I had discussed earlier also, if I'm not wrong, what is the relation of J.D. Vance with India? He has some relation with India. And yes, Sharve Karale, very good. His wife is an Indian origin. What is her name? Usha Vance, very good. Mukti Sharma, Mishika, Veer Sharma, you all are right. J.D. Vance's wife is Usha Vance, and she is actually have some Indian origin link. And she is from which state? Yes, I had discussed it earlier. Very good, Sharvi Karale, आपने आंसर किया. And किसी और ने भी शायद किया था, आंध्र प्रदेश. Yes, दीप्ताक्षी. Yes, मुक्ति शर्मा, आंध्र प्रदेश, है ना, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल. Yes, she is the right answer. ठीक है. तो his Usha Vance is the wife of J.D. Vance, है ना. She belongs to Telugu Brahman community, migrated from Andhra Pradesh. ठीक है ना. Okay, so just have an idea about it. Now let's move on to the next one. Who is the vice presidential candidate from Democrat Party? इनका नाम बताइए. वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है डेमोक्रेट पार्टी से? प्लीज टेल मी. यस, टिम वॉल्स, वेरी गुड. वीर शर्मा, मिशिका, यू बोथ आर राइट. ठीक है. कमला हैरिस तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ना. सो टिम वॉल्स इज एक्चुअली द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द डेमोक्रेट पार्टी. ठीक है. एंड यस, द इलेक्शन डिबेट इज हैपनिंग. तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का डिबेट हुआ है, सो वेरी सिमिलर टू दैट देयर विल बी अ डिबेट वेरी सून ऑन द न्यूज़ चैनल, जेडी वांस वर्सेस टिम वॉल्स. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. यस yes, American lawyer. Yes, Ridhima, Mishika, Divyansh, you all the right. And like we have seen recently the debate between Kamala Harris and Donald Trump. So in the same fashion, JD Vance and Tim Walz will be having debate on news channel. Now, तो ये JD Vance के बारे में we had already discussed. Republican Party से vice presidential candidate है ना. And he is actually from Ohio. Ohio is a state. ठीक है. And he's a senator. मैंने आपको बताया भी था, we had discussed it earlier, that the Parliament of USA is actually not called as Parliament, it is called as US Congress. And there are two houses. Can you please tell me in the comment section the name of the two houses of United States Congress?
यूएस कांग्रेस का 2 हाउस होता है, उन दोनों का नाम क्या है? सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड वीर शर्मा, यू आर राइट, है ना? तो एक को कहते हैं सेनेट, विच इज अपर हाउस, like we have in Rajya Sabha, like Rajya Sabha in India, and House of Representative is like lower house, which is Lok Sabha. तो सेनेट जो होता है ना, राज्यसभा, बट सेनेट जो है बहुत पावरफुल है एज कंपेयर टू इंडियाज राज्यसभा। सेनेट इज वेरी पावरफुल, ठीक है? तो जस्ट हैव एन आइडिया। तो सेनेट के मेंबर्स को सेनेटर कहते हैं, तो इसीलिए जैसे आपने देखा होगा सेनेटर लिखा होता है, सेनेटर जेडी वॉन्स, है ना? सो इज अ मेंबर ऑफ सेनेट एज वेल, ठीक है? सो दीज टू थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। 100 सीट्स होती है इसमें, 435 होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है? सो यू शुड हैव बेसिक आइडिया अबाउट इट। दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। उषा चिलोकोरी वांस is Indian origin, है ना? So these things you should be knowing about her, है ना? So is इनके बारे में we have already discussed, है ना? There's nothing much to explain. I'm just checking it. Yes, she is from Krishna district, Pamaru village, Krishna district. ये याद रख लीजिएगा. Just have an idea about it, है ना? So here is the state of Andhra Pradesh, and somewhere here you will find this is Krishna district, ठीक है? Okay. Now let's move on to the next one. Who was the vice president of USA when Donald Trump was the president between 2017 to 21? What is the right answer? मैं आगे और भी बहुत सारी चीजें लाऊंगा. I'll be coming up with very some more important things which you must have not read in the newspaper. But actually होता क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन न्यूज में है ना, तो वो पास्ट से भी पूछते हैं सवाल. They go and ask the past also. ठीक है? यस, राशि शार्वे, तनिष्क मुक्ति, यू आर राइट. माइक पेंस वाज द राइट आंसर, ठीक है? जब 2017 से 2021 when Donald Trump was the president, Mike Pence was the vice president. Okay? Yes. Now, let's move on to the next question. The next question is Kamala Harris, the current vice president of USA, has some links from India, जो कि अभी US vice president है, and she is presidential candidate from Democrat Party, and she has link with Democrat Party से, है ना? She has also some Indian origin link, वो आपको बताना है. From which state? Yes, Safi, Nomani, Sharve, Rashi, Deeptakshi, Namo, Ayush, you are right. Tamil Nadu, the state of Tamil Nadu, ठीक है? So her name is Kamala Devi Harris. पूरा नाम देख लीजिएगा, सबका जितने भी लोग हैं ना, सबका पूरा फुल नेम देख लीजिएगा. और उनकी जो मम्मी है श्यामाला गोपालन, शी इज तमिल इंडियन बायोलॉजिस्ट, है ना? who had done research on progesterone receptor breast cancer and all, ठीक है? इसीलिए पता होना चाहिए. This you should be knowing about Kamala Harris. Okay, yes, है ना? And she is first black woman for vice presidential election. Let's stop. हाँ, if she actually wins the US presidential election, she will be the first black woman to do so. And who was the first black person, male, to become the president of USA? Anyone? Because generally the word black and white should not be used because it is racist terminology. But sometimes these types of questions are asked in the exam. इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ. First black person to be the president of USA was Barack Obama. Yes. And if she wins, she will be the first black woman to be the president of US. है ना? Barack Obama के बारे में 2008 में बने थे. Yes. Many people have answered Obama. Very good. Very good. Very good. 2008 से 16. हाँ. Okay. Now we have done this. 46th president. Kamala Harris is 49th vice president currently. ये सब पता होना चाहिए. Just have an idea. Now let's move on to the next one. Which of the following is not the condition for US presidential election? Not the condition, बताइए. There is a request, everyone please press the like button और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा. We'll be coming up with more important contents in the upcoming 2-3 months. तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा and press the like button as well. Yes, तो D is the right answer. Not पूछा जा रहा था. Yes, Arav, Veer Sharma, Riddhima, Ayush, Dhriti, you all have answered.
मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। नेचुरल बॉर्न मतलब होता है एक्वायर्ड सिटीजन नहीं होना चाहिए। इन इंडियाज केस इट इज नॉट रिकॉर्ड, इन इंडिया में सिर्फ सिटीजन होना चाहिए, बट इन यूएसए देयर इज अ कंडीशन ऑफ नेचुरल बॉर्न सिटीजन एंड शुड हैव बीन लिविंग फॉर 14 ईयर्स। दिस इज द कंडीशन इन यूएसए। ये कोई कंडीशन नहीं कि सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर होना चाहिए पास्ट में एटलीस्ट वंस। दिस इज नॉट अ कंडीशन कि he should have been a member of either of the two houses once in his life. There is no such condition. ये तीनों कंडीशन है, ठीक है। सो ये है, आप देख सकते हो, है ना। दिस इज ओरिजिनली मेंशन्ड, आई हैव टेकन एक्सेप्ट अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 35 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए और 14 साल से अमेरिका में रह रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाई आई एम सेइंग इट, तो नेचुरल बॉर्न मतलब मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन who is let's say born in some other country, let's say I'm giving Sri Lanka. He came to India and he applied for citizenship, became a citizen of India. Then he can fight the India's presidential election and can become a president. ठीक है। एक श्रीलंका का आदमी था, वो इंडिया आया, इंडिया में अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए, उसको सिटीजनशिप मिल गया, तो वो इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ सकता है। दिस इज नॉट द केस विथ यूएसए। If you are a US, for becoming a US presidential election, you should be born in USA and born citizen होना चाहिए। पैदा होते ही वक्त आपको सिटीजन होना चाहिए यूएस का। दिस इज द आइडिया, यूएस के लैंड में, है ना। सो ऐसा नहीं कि आप यू केम फ्रॉम सम अदर कंट्री, देन यू बिकेम a US citizen and then you fight for the US presidential election. No, समझ ली, got the concept? So this is natural born citizen which is not required in Indian presidential election. ठीक है, I think it's clear। और ये कोई कंडीशन नहीं है, है ना। Now, when we are talking about US presidential, तो I'll be talking in detail about कि US president पहले कौन थे, सबसे लंबे पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। So I'll be asking many questions associated with this. Plus, I will ask some more questions about the past, recent past से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि शायद आपने कहीं और नहीं पढ़ा होगा, बट कभी कभी वो पूछते हैं एग्जाम में, इसीलिए यस, द राइट आंसर इज डी। जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द फर्स्ट US president. Yes, Namo, Veer Sharma, Araf, Safi, Ayush, Mishika, Triti, Tanishq, Mukti, Rashi, Ridhima, Mukti. You are correct. Divyansh, D is the right answer. Now, how many US presidents have been assassinated so far? 3, 5, 4, 2. Assassinated means they were killed when they were in the office. Office means they were the president at that time. Yes. So actually the right answer is 4. Okay, I got only one. Yes, Ridhima Dwivedi has answered me correctly. C is the right answer to this question. Okay. Now, which of the following has not been assassinated? इनमें से कौन है जिनको assassinate नहीं किया गया था? हाँ, मैंने बहुत पहले कभी क्लास लिया था, 3-4 महीना पहले, I think 2-3 months back. Yes. Yes, Veer Sharma, Araf, Ayush, you are right. Richard Nixon नहीं थे, बाकी तीनों को actually they were actually killed so while they were in office. So Abraham Lincoln, James A. Garfield, William Mackenzie, and John F. Kennedy. Okay, so they were actually killed, and this is what you should be knowing about. Yes. So D is the right answer. Yes, Veer Sharma, very good. Which US president has served for the longest period? And for shortest period, बता दो, so I'll be very happy. But this is very, very important. Because now you cannot fight for more than 2 terms. So 4 plus 4 at max for 8 years, a person can be US president. So, but Franklin D. Roosevelt, he was during the World War II, है ना? So B is the right answer. Yes, Veer Sharma, Namo, Ayush, Deeptakshi, Araf, Tanish, Mishika, Ridhima, Rishi, all the right. इनके बारे में बहुत फेमस है, प्लीज गो एंड रीड इट। 3rd and 4th टर्म्स इनका खास ये था, जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, ठीक है। एंड उसके बाद 22nd अमेंडमेंट पास किया गया, जब उसके बाद नो पर्सन कैन बी इलेक्टेड फॉर मोर देन ट्वाइस, 2 बार से ज्यादा इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो 4 years का इलेक्शन टर्म होता है, सो 4 + 4 8 years। सो नो वन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर मोर देन 8 years आफ्टर दिस 22nd अमेंडमेंट। लेकिन उससे पहले हो सकते थे, तो ये 4 बार बन गए थे, 4 × 4 16 years के लिए लॉन्गेस्ट।
और शॉर्टेस्ट का है विलियम हेनरी हैरिसन। तो जैसे ही वो ऑफिस में बैठे 31 डेज के अंदर ही एक्चुअली डाइड। सो दैट इज व्हाट he died a natural death, मतलब not, he was not killed, rather he died. So actually he was the shortest serving. Yes, Deep Takshi, very good, huh? William Henry Harrison. Now see, the current president of USA, everyone knows. The current vice president, please tell me. And the current US Secretary of State. US Secretary of State kya hota? It is actually very similar to foreign minister in India. So they do not use the word foreign minister, they use the word Secretary of State. इसमें तो कमला हैरिस होगा, everyone knows, and she is fighting the election. तो ये वाला बताना, नीचे वाला ये. Yes, Arab Mokhtar, you are right. Namo, Triti, Tanishq, Mishika, Namo, you are right. The right answer is Anthony Blinken, है ना? Secretary of State ही पता होना चाहिए, because he also comes in the news again and again. So you should be knowing it, है ना? So this is Anthony Blinken. He's currently the Secretary of State, or in terms of India, you can say Foreign Minister. Now, this is also very, very important, and I have taught this in paid classes. मैंने एक बहुत famous जो case है, वो this was actually in the current affairs as well. So I have taught in the paid classes as well. Yes, Ridhima, Veer, Mishika, Deeptakshi, Arav, Rashi, Tanishq, you are right. Donald Trump, he was found in 34 charges. Jury found him guilty, है ना? Felony मतलब जो बड़ा crime होता है, थोड़ा सा compared to small crimes से थोड़ा सा बड़ा criminal charge. That's, they use this word in USA. शायद इंडिया में ये सब word नहीं use होता है, but they use this word felony and all, है ना? Convict for felony crimes and all. इसी साल मई में न्यूज में था, है ना? Yes. Yes. तो इसमें बहुत सारे केसेस, जो सबसे मोस्ट फेमस है वो ये है. आई हैव टॉट इन डिटेल इन द पेड सेशन, एंड दिस इज एक्चुअली, प्लीज गो एंड रीड इट. दिस वाज एक्चुअली फजिंग ऑफ द डेटा, तो रिगार्डिंग दिस हश अप मनी गिवन एंड ऑल, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा जाके. सो दिस मनी वाज गिवन, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल in the paid sessions. So otherwise, if you are not from paid student, then please read it. Because maybe कुछ दूसरा क्वेश्चन, जैसे हश अप मनी पूछ सकते हैं, ये क्या होता है हश अप मनी? Okay, so these things can be asked. Okay, हाँ, there are other things also. 34 cases में हुआ था. This was the most famous one. Now Donald Trump was convicted, but still he can fight the election. Yes, the reason was actually, अगर आप BBC और Indian Express की आर्टिकल छानोगे, so you'll find it that there is nowhere mentioned in the Constitution. पे लिखा होगा he was found guilty of falsifying the business record. मैंने ये पेड सेशन में पढ़ाया भी था कि आप पैसा दे रहे हो as a compensation for not speaking is not a crime, but he falsified the business account, कि जो मैंने पैसा दिया है वो ही एक्चुअली गलत तरीके से उसने लिख दिया था, कि he did not write it clearly that he gave this amount for as a hush up money, not to speak his relationship or extramarital affairs in the public. ठीक है? So that is what you should be knowing it. ठीक है? तो can he still run for the president? Yes. है ना? बस ये कंडीशन चाहिए, ये लिखा हुआ है 35 years plus होना चाहिए, नेचुरल बॉर्न होना चाहिए, you should be living in USA for at least 14 years. There is no rules blocking candidate with criminal records. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है? So that is why he is fighting the election. Okay? हाँ. Now this is very, very, very important. मैं उसको स्टार मार्क लगा रहा हूं. मैं उसका रीजन बता रहा हूं क्यों. क्योंकि अगर आपने क्लैट का इधर 2-3-4 साल का क्वेश्चन देखा होगा, तो वो करते क्या है, जो भी चीज न्यूज में है ना, उससे रिलेटेड पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, या रीसेंट पास्ट में. तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, और ये बहुत फेमस हुआ था. आई नो कि चूंकि हो सकता है आप लोग उस टाइम पर यू आर नॉट दैट grown up to know this, but still मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं. नहीं, एक्चुअली लेट मी क्लैरिफाई, ये तीनों एक ही है, x. ठीक है?
मतलब ऑल थ्री में जो स्पेस है, मतलब उसमें ऑल थ्री आर एक्चुअली द सेम. And yes, Araf Mukhtar and V Sharma, you both are right. Actually, there was an allegation in 2016 US presidential election that Russia actually helped Donald Trump. ये एलिगेशन लगा था एंड ऑल थ्रू दिस, और ये बहुत फेमस हुआ था. इट बिकेम वेरी फेमस. तो आई एम जस्ट गिविंग फ्यू सेकेंड्स मोर, देन आई विल मूव. कोई बच्चा बता दे व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज एक्स. कैम्ब्रिज एनालिटिका कहते हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस केस हुआ था. ओके, सो पर्सनल डेटा बिलोंगिंग टू मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स वर कलेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट बाय ब्रिटिश फर्म एंड यूज फॉर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग. देखो होता क्या, उनके जो डेटा है, जो फेसबुक का डेटा, उसको यूज किया गया था जैसा एलिगेशन लगा था कैम्ब्रिज एनालिटिका के द्वारा. उससे क्या होगा, डेटा से पता चल जाता है कि अच्छा आपकी थिंकिंग क्या, क्या सोच है, किसको लाइक कर रहे हो, किसको डिसलाइक कर रहे हो, एंड दीस डेटा वर यूज्ड टू प्रमोट इलेक्शन फंडिंग विदाउट देयर परमिशन एंड ऑल. सो वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एक तरह से हुआ. तो यही सब चीज न्यूज में था. तो काफी ज्यादा, इवन ब्रेक्सिट रेफरेंडम में भी उनका नाम आया था. दीस थिंग्स वेयर in fact there was allegation of Russian interference in favor of Donald Trump. ये सब भी काफी न्यूज में आया था. हाँ, एग्जाम में आ सकता है, इसी तरह का सवाल देते हैं वो, कि जो कोई भी चीज करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड कुछ चीज रीसेंट हिस्ट्री या रीसेंट पास्ट में हुआ, दे गिव. आई हैव सीन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे क्लैट 2021 में दे गिव गांधी पीस प्राइज, इसलिए कि उस टाइम पर अनाउंस किया गया था. अब उन लोगों ने ये पूछा कि 2014 में गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया. इसरो को दिया गया था. एंड कोई बंदा अगर गांधी पीस प्राइज पढ़ रहा है तो 2014 का क्यों पढ़ेगा, ठीक है. लेकिन बट दे आस्क्ड, और उस टाइम पे गांधी पीस प्राइज शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था. तो उन्होंने और पूरा पूछना शुरू कर दिया. शेख मुजीबुर रहमान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कि प्राइम मिनिस्टर थे, कब उनका असैसिनेशन हुआ. न्यूज में ये था कि गांधी पीस प्राइज शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, ये 2021 में. और पूछ रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कि प्राइम मिनिस्टर थे, कब, कौन सा डेट बताइए उनका असैसिनेशन का. ये पूछा था एग्जाम में, 15 अगस्त 1975. हाँ, तो वो इस तरह की चीज पूछते हैं, जो भी चीज न्यूज में होता है उसको डिटेल में जाते हैं वो, ठीक है. सो दिस इज सम इशू एंड ऑल. आई डोंट नो, दिस इज देयर वे ऑफ आस्किंग. इसीलिए मैंने आपको कुछ और होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क प्लीज सीरियसली अटेम्प्ट कीजिएगा. उसका रीजन है, आई एम टेलिंग यू द रीजन, इसलिए कि ये अमेरिका से रिलेटेड चीजें वो न्यूज में, ठीक है. तो मैं आपको कुछ चीज और होमवर्क दे रहा हूं, बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली. अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, और थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ लीजिएगा कि उसका आइडिया क्या था. इट वॉज एक्चुअली फॉर फाइट स्लेवरी के अगेंस्ट था मेन आइडिया, ठीक है. दूसरा है 13th अमेंडमेंट, ये भी स्लेवरी से रिलेटेड है. स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड कब, कौन से ईयर में, एक्सप्लेन कीजिएगा. तीसरा बताइए कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब से कब तक हुआ, और यूएस इंडिपेंडेंस, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का डेट एग्जैक्ट, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. चलो ये मैं बता देता हूं, ये हुआ था 4 जुलाई 1776 को. दैट इज व्हाई दे डू सेलिब्रेट 4 जुलाई इज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ईयर बताना है, कब से कब तक हुआ, और असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, ये इससे लिंक्ड है इस दोनों टॉपिक से, ठीक है. असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन वाज डन बाय हु, व्हिच पर्सन. 13th अमेंडमेंट के जस्ट बाद इनका असैसिनेशन हो गया था. तो आपको ये बताना है कि अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन कब हुआ, हु वाज द पर्सन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल. तो ये दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क. ओके, उसके अलावा एक और चीज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं. इसके अलावा अदर देन दैट, अगर आपने अमेरिका का फ्लैग देखा होगा तो यहाँ पे कुछ स्टार्स होते हैं. कितने स्टार्स होते हैं और ये कितने स्ट्राइप होते हैं, ये बताना है. और इसका क्या लिंक है. जैसे स्टार्स होते हैं 50 होते हैं और स्ट्राइप्स 13 होते हैं, ठीक है. यस, 50 स्टार एवरीवन नोस. यस, वेरी गुड. वेशिका, वीर, धृति, यू ऑल राइट. स्ट्राइप्स जो होता है ना, रेड व्हाइट होता है, वो 13 होता है. उसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई देयर इज 13. हाँ, 1 स्टार फॉर, ये तो आपको पता होगा, 50 स्टार, 1 स्टार फॉर ईच स्टेट. यस, देयर आर 50 स्टेट्स, but there are 13 stripes which represents what. ठीक है. सो ये सब होमवर्क है, प्लीज गो एंड फाइंड आउट, बिकॉज दीज आर. क्लास ओवर होने के बाद, आफ्टर द क्लास इज ओवर, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन नीचे. यस, आई हैव गॉट वन राइट आंसर फ्रॉम हर्षिता, वेरी गुड. हाँ, क्लास ओवर हो जाएगी, विल बी प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड वीडियो, सो आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
So this is all about today's class. Thank you, everyone. Thanks for watching. Please press the like button, share this video, and subscribe to our channel.